अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निसास किचन। आज मैं शेयर करूंगी आलू टिक्की रेसिपी। इसके लिए चाहिए आलू आधा किलो, सब्ज़ धनिया, अजवाइन हाफ़ टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च कटी हुई, देगी मिर्च 1 टेबल स्पून, आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब शामिल करेंगे बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स। पेस्ट रेडी है। अब बना लेंगे टिक्कियाँ। टिक्की को फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स।
टिक्कियों को लाइट ब्राउन होने पर पैन से बाहर निकाल लेंगे। आलू की टिक्कियाँ रेडी हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें। And for more recipes, please subscribe to my channel. Thank you.